right? We have finished with kingdom Monera. We have finished with kingdom Protesta. We are done with kingdom Plantae and kingdom Animalia. The only kingdom that is remaining for us to do is kingdom Fungi. Okay? So we'll take that kingdom, and then uske baad, then we will take up the small discussion on viruses and lichens also, so that we can finish the chapter today. Okay. I believe next week you have a little change in your schedule. I think so, right? Now, Monday, Tuesday, I think Keur sir is taking. Keur sir lecture ले रहे हैं, और Wednesday online lecture है, because Thursday से छुट्टी है ना. So Wednesday is going to be an online session. So still not decided who's going to take that online lecture, right? Me or Vishal sir. Let me see the message. ठीक है, सर ने मैसेज किया, आई हैव टू टेक ऑन वेडनेसडे. ओके, तो वेडनेसडे आई विल बी टेकिंग लिविंग वर्ड. ठीक है, तो हम लोग वेडनेसडे को कर देंगे. चलो, विल स्टार्ट विद किंगडम फंगाई. I hope you have your NCERT books near you, please. Unique kingdom of heterotrophic organisms. Yes, anyone, what is heterotrophic? Can raise your hand to answer what is heterotrophic. Can help us, please? What do you mean by heterotroph? Yes, Rutvi, what is heterotroph? They do not make their own food depend on plants or plants and other organisms. Depend on others for their food, right? ना, जहां भी ये ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन. TROPH, ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन. हेटेरो means different, so they depend on different organisms, right? ना, so if the one on they depend are living, then we say it is parasite, and if they are dead, then we say it is saprophyte. ठीक है ना? So उसमें, तो यहां पर it is more of saprophytic. When your bread develops a mold, ये दिख रहा है, वो bread के ऊपर वो greenish develop हो जाता है ना, stale होता है bread तो, right? We had, way back in school, 6th, 7th में थे, I don't remember, we were asked to do a small experiment, take a piece of stale bread, sprinkle some water on that, right? Na? Sprinkle, pour water nahi, sprinkle some water on that and just wrap it and keep it for 2-3 days, तो ऐसा greenish part develop होता है, उसको mold बोलते हैं हम लोग. That is fungus, right? The common mushroom that you eat, right? The common mushrooms available, right? It's one of the good sources of protein, vegetable protein, right? Mushrooms. And mushroom toppings are very, very famous in pizzas and all that, right? So white spots on mustard leaves are due to parasitic fungus. Ye dekho, can have these white spots on mustard leaves. Mustard, belongs to family Brassicaceae, right? ये जो parasitic fungus है ना, अब क्योंकि these are all different, क्योंकि usually fungus is saprophyte, ये parasitic fungus है, इसका नाम है albugo. The parasitic fungus is called as albugo. आगे उसका mention भी आएगा अपने को, right? You can make a note here, right? NCERT में जो parasitic fungus लिखा हुआ है ना mustard पे, make a note, albugo. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Very famous yeast is, famous in use for making bread also, bakeries के अंदर और breweries के अंदर, right? Sometimes कभी-कभी ये bread and beer को लोग change कर देते हैं. Bread is made in a bakery and the beer, the alcohol is made in a brewery, BREWERY, brewery बोलते हैं उसको. So they change that sometimes. Other fungi can cause diseases in plants and animals, like wheat rust causing Puccinia, right? Puccinia is the name of fungus. The disease is called as wheat rust, right? Obviously, the name is suggesting that it causes this disease in wheat plant. Okay, so wheat rust causing Puccinia. Some can be source of antibiotics. Very, very famous, penicillium, right? Penicillium notatum, was the first antibiotic to be discovered was penicillin, right? The source was Penicillium notatum. That was a fungus ka name. Anybody who discovered penicillin? Yes, Samyak? Edward Jenner. Edward Jenner, नहीं भाई, वो तो वैक्सीनेशन के लिए था. राहुल? Alexander Fleming.
हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट ना। कभी कभी जोश जोश में लोग अलेक्जेंडर ग्राम बेल भी बोल देते हैं। ओके, ओके, ही डिस्कवर्ड टेलीफोन। ओके, हाँ, ठीक है। सो some fungi can be source of antibiotics also. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and on animals and plants, right? They are variable, they have a lot of habitat to grow. But the most important thing about fungus is they prefer to grow in warm and humid places. Moisture रहेगा ना, it promotes the growth of fungus very much. जहां भी moisture रहा, right ना. See, currently we are in a heat wave. पढ़ा रहेगा न्यूज में that India में there is a heat wave going on, especially in the north. Okay, places like Nagpur and all that have got 45 degrees. We are still at 36 right now. But Bombay में issue क्या है? We are close to the sea. Humidity levels are very high. We sweat a lot, right? And see, when we sweat, and if we don't manage to keep the body parts dry, the sweating, if it is not treated properly, it can lead to fungal infections. It can lead to fungal infections because moisture है ना वहां पर, right? खाना भी देखो जल्दी खराब होता है गर्मी के अंदर यहाँ पे, right? So because of fungus, so they prefer to grow in warm and humid areas. It is a multicellular body. एक minute, we'll first check the NCERT. What does the NCERT mention? Please, I hope the NCERT is near you, please. Here. Okay, some fungi is a unique kingdom. Okay, moist bread, rotten, the common mushroom, white spot on mustard leaves, parasitic fungus क्या पे albugo अगर लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा, right ना. Some unicellular fungus yeast used to make. Okay, Puccinia, done. Okay, no problem. Yes, we are covering all the points. Now, in general, what is the structure of a fungus? In general, it's a multicellular organism. ओके, यूनिसेलुलर में सिर्फ दो आते हैं अपने पास, एक बैक्टीरिया और एक प्रोटिस्टा, वो यूनिसेलुलर है. ये मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्शंस उसका ईस्ट है. कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम. तो फंगस का जो पूरा बॉडी, यहाँ पे देखो, एक मैंने एक सैंपल आपके सामने डायग्राम रखा है, इमेज रखा है, राइट. शेप से इट इज वेरी क्लियर दैट ये मशरूम का शेप है, बहुत क्लियर है एकदम, ठीक है ना. अब ये जो पूरी बॉडी है उसकी, उसको बोलते हैं माइसीलियम. एंड इफ यू कैन सी, द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. Individual thread-like structure is called hyphae. Individual thread-like structure is called hyphae. Okay. Now, the hyphae may be with septa or without septa. अंदर से the hyphae can have partitions. Septa partition को बोलते हैं. तो अगर septa है तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ये septate है. और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसको असेप्टेट है. ठीक है. देखो, जब सेप्टा निकल जाता है ना, तो सारे कंपार्टमेंट्स एक हो जाते हैं. सारे कंपार्टमेंट्स एक हो जाते हैं, राइट. यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन ना. अर्लियर ट्रेन का कंपार्टमेंट दोनों साइड से बंद होता था, अभी क्या थ्रू एंड थ्रू होता है. यू कैन ट्रैवल थ्रू आउट द ट्रेन. सेप्टा इज रिमूव्ड, द पार्टीशन इज रिमूव्ड नाउ. सो वंस दिस पार्टीशन इज रिमूव्ड, सब कुछ थ्रू एंड थ्रू होता है. तो वो इंडिविजुअल जो सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है ना, पार्टीशन निकलने से क्या होगा, अब वो पूरा स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होता है, राइट. क्योंकि पार्टीशन निकल गया ना, तो पूरा लंबा स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लियड होता है. और मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीनोसाइटिक, राइट. सीनोसाइटिक, ये वर्ड पहले आ चुका है अपने को, राइट ना. सीनोसाइटिक. सीनोसाइटिक का दूसरा वर्ड कोई बताएगा मुझे? रेज योर हैंड. राहुल. सिंसाइटियम. सिंसाइटियम, वेरी गुड. देखो, हम लोगों ने सर के हाथ में पढ़ा रहेगा आपने, मसल फाइबर, स्ट्राइटेड मसल इज अ सिंसाइटियम, क्योंकि मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, राइट ना. तो सीनोसाइटिक कंडीशन कब आएगी, जब वो नॉन सेप्टेट होगा. नॉन सेप्टेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा. सेप्टेट रहेगा तो यूनी न्यूक्लिएट रहेगा.
The cell wall in fungus is made up of chitin or fungal cellulose. Fungi contain well-organized membrane-bound cell organelles. Obviously, eukaryotic structure. It's a eukaryotic structure, so cell organelles तो होना ही चाहिए उसके पास, except chloroplast. Right? It is saprophytic. It is dependent. Heterotrophic, autotrophic तो है नहीं. Right? So it is not having chloroplasts. Right? Just have a look at the NCERT, please. Right? ये देखो लिखा है. Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungus are made up of chitin and polysaccharides. Right? I am not in the mood to discuss chitin right now. You all know what is chitin. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate. Dead substrate. Please underline dead. And hence they are called saprophytes. So why are they called saprophytes? Because they derive their nutrition from dead substrates, and that too soluble organic matter. Those that depend on living plants and animals are called parasites. Example ऊपर है albugo, mustard के ऊपर white spots, ठीक है ना? They can also live as symbionts in association with algae as lichen. पढ़ा हमने algae fungi combination is called as lichen, and with roots of higher plants as mycorrhiza. ये भी पढ़ा हम लोग ने. Fungi और root का association is called as mycorrhiza. Again, for your benefit, myco means fungus, rhiza means roots. Right? हम लोग बोलते हैं rhizoids बोलते हैं हम लोग. Rhiza का मतलब roots होता है, myco का मतलब होता है fungus. So the root and fungus association, symbiotic association, is called as mycorrhiza. ठीक है? Clear, please? Okay. Now, reproduction in fungus can take place by three means: vegetative, asexual, sexual. Vegetative में fragmentation, fission, budding are means of vegetative reproduction. Asexual reproduction is by spores, which are called conidia or sporangiospores or zoospores. Depend, motile है, non-motile है, depend करेगा उसके ऊपर, ठीक है? Sexual reproduction is also by spores. अब देखो थोड़ा different आ गया यहाँ पे. Asexual भी spore है, sexual भी spore है. Now the spores are called oospores, ascospores or basidiospores. Right? So यहाँ पर we'll have to tread a little carefully that which group of fungi has what kind of spore. And spore का production भी अगर structure के अंदर है तो we say it is endogenous. अगर structure के बाहर है तो it is exogenous. Right? Now, we will have a look at that also. The spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. Did the term fruiting body come last time? Plasmodium में आया था, मैंने बताया था कि फंगस का नेचर है, राइट ना? उसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं. ये देखो पहले तो दिखा दो. देखो इसमें इन केस ऑफ मशरूम ये जो ऊपर का अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बना ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है. यहाँ स्पोर बनेगा, ठीक है? ये देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है. कैन यू सी रिलीज ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी हियर? ठीक है ना? ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, asexual as well as sexual. Right? Vegetative में fragmentation, fission, budding. Asexual भी spores है और sexual भी spores है, अलग अलग type. ठीक है? And where are the spores produced? Inside the structures which are called fruiting bodies. Now, sexual reproduction का एक example. Right? देखो हम लोग fungi का classification करेंगे ना, तो we will divide fungi into 4 groups. देखो आपके सामने स्क्रीन पर है फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बसीलियोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स. राइट? 4 ग्रुप्स है अपने पास. राइट? उसमें से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ बसीडियो. बसीडियो का एग्जांपल लेके हम लोग ये वाला डायग्राम पढ़ रहे हैं अभी. राइट? प्लीज ध्यान देना. राइट? फंगस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ द सेक्सुअल साइकिल, reproduction sexual cycle involves 3 steps.
राइट। अब देखो, जो बसीडियो स्पोर है वो जर्मिनेट होगा। हम बोले आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बसीडियोमाइसीट, वो जर्मिनेट होके माइसीलियम में हाइफे बनेगा। नाउ जो दो ऑपोजिट टाइप्स है हाइफे के, वो सामने आएंगे, मेल फीमेल टाइप्स। यू कैन सी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस, मेटिंग टाइप्स, दे विल कम टुगेदर। नाउ दे विल फ्यूज टुगेदर। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। बसीडियो जो है वो सेप्टेट है। अच्छा, सेप्टा मतलब यूनी या मल्टी? यूनी। मैंने कहा नॉन सेप्टेट रहेगा तो मल्टी होगा, सिनोसाइटिक, राइट ना। यहां बसीडियो जो है वो सेप्टेट है, राइट। अब ये एक है, समझो यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है। अब ये दोनों साथ में आते हैं और फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन सिर्फ साइटोप्लाज्म का होगा, न्यूक्लियस का नहीं होगा। फ्यूजन सिर्फ पहले स्टेप में, in the first step there is only cytoplasm fusing. That's why the first step is called plasmogamy. Plasmogamy. The first step in fusion is called क्यों प्लाज्मोगैमी बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि पूरा साइटोप्लाज्म साथ में आ गया है। अभी भी दो न्यूक्लियस अलग अलग है। ये देखो यहां पर, कैन यू सी टू न्यूक्लियाई टुगेदर ना? ये दोनों न्यूक्लियाई है, हैप्लॉइड। अगर दो न्यूक्लियाई एक स्ट्रक्चर में है तो क्या उस स्ट्रक्चर को वी कैन कॉल इट एज अ डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। यू नो कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। सो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड है? इट्स अ डाइकैरियोटिक माइसीलियम पूरा भी, राइट। तो पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी, सिर्फ साइटोप्लाज्म साथ में आ गया। नाउ अब ये जो दो न्यूक्लियस है ना, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, अब वो फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं स्टेप को क्या बोलूंगा? इट्स कॉल्ड एज कैरियोगैमी। नाउ इट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। हैव अ लुक एट दिस। नाउ डू वी सी अ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई नाउ इंस्टेड ऑफ टू हैप्लॉइड्स नाउ? आर वी सीइंग दैट प्लीज? यस। सो हैविंग टू हैप्लॉइड का वन डिप्लॉयड नाउ। अब जबकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया है, कैन इट अंडरगो मियोसिस? हैप्लॉइड तो मियोसिस नहीं कर सकता, डिप्लॉयड ही मियोसिस कर सकता है। सो नाउ दिस डिप्लॉयड विल अंडरगो मियोसिस एंड मियोसिस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पोर्स नाउ? ऑब्वियसली 4 स्पोर्स, राइट ना। नाउ हैव अ लुक एट दी स्पोर्स। ये देखो, अब अंदर स्पोर बन गए और ये जो स्पोर है ना, ये बाहर आके अटैच होते हैं। ये देखो ना, ये बॉडी है फंगस का और ये स्पोर्स के नीचे बाहर की तरफ अटैच्ड है। दिख रहा है आपको? अभी रिलीज नहीं हुए, ये अटैच्ड है बाहर की तरफ से। बाहर की तरफ से अटैच्ड है। सो क्या शैल वी से दिस इज एक्सोजेनस और एंडोजेनस? विल से दिस इज एक्सोजेनस। दिस इज एक्सोजेनस। नाउ आई टोल्ड यू स्पोर का फॉर्मेशन या तो एंडो होगा या एक्सो होगा। वो चारों ग्रुप्स में देखना पड़ेगा किसमें एक्सो है किसमें एंडो है। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स हियर नाउ? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, इन दैट ऑर्डर. The order is important. So first step, plasmogamy. Second step, karyogamy. Third step, meiosis. Right? देखो NCERT में कैसे डिस्क्राइब किया है? When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae, haploid of compatible mating types, मैंने डायग्राम में प्लस माइनस दिखाया आपको, देखो, come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells. In some of them, immediately diploid हो जाएगा. But in some other fungi, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? Ascomycetes and Basidio. हमने एग्जाम्पल कौन सा पिकअप किया है? Basidio का पिकअप किया एग्जाम्पल. And intervening यानी दोनों स्टेप के बीच में dikaryotic stage is occurring. What is a dikaryotic stage? कि जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं. That's why two nuclei. So that's why dikaryotic phase is there. Later, the parental nuclei fuse, cells become diploid. The fungi forming fruiting bodies in which reduction, meiosis occurs, leading to formation of haploid spores. Yes, Jia, bolo beta. So in the dikaryotic stage, can we call it as diploid or will it be haploid? It is haploid because it's still fusion नहीं हुआ है बेटा. It So cannot even undergo though there is meiosis. in
once. नहीं, still meiosis is not possible ना बेटा. Right. Okay. Only when it becomes diploid meiosis is possible. ठीक है. हाँ रुतवी. So when we say they are two compatible mating types, they are not like distinct female and male. You can't call them as distinct male and female, right? Now they can come together only for reproduction. ऐसा. Now kingdom fungi has got 4 groups, 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Right? Again, Phyco, Asco, Basidio, and Deutero. Phyco सबसे primitive fungus है, राइट? इसलिए उसको हम लोग एल्गल फंगाई बोलते हैं. बहुत मेटाफोरिकल नेम है एकदम उसका. एल्गे प्रिमिटिव है ना ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसको एल्गल फंगाई बोलते हैं हम लोग. एस्कोमाइसीड्स को सैक फंगाई बोलते हैं क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसलिए. बसीडियोमाइसीड्स को हम लोग ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, राइट? अब ये चारों में से इंपॉर्टेंट ये 2 है, एस्को और बसीडियो, क्योंकि प्रॉपर स्टेजेस सब इसमें डेवलप्ड है. ये बेचारा जो है वो प्रिमिटिव है और ड्यूटेरो में उसका सिर्फ असेक्सुअल स्टेजेस नोन, सेक्सुअल स्टेजेस, इसलिए उसको इम्परफेक्ट बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. वी हैव टू डू ऑल द 4. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats, decaying wood in moist and damp places. आ गया moistness. As obligatory parasites on plants. देखो नीचे एग्जाम्पल albugo है ना? Parasitic on mustard, white spots. Okay. Mycelium is aseptate and cenocytic. मैंने बोला aseptate होगा तो मल्टीन्यूक्लियड होगा. मल्टीन्यूक्लियड कंडीशन क्या बोलेंगे? सीनोसाइटिक. जस्ट चेक इन अदर्स. देखो देखो प्लीज टुवर्ड्स द स्क्रीन. एस्को में देखो इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. बसीडियो में देखो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ड्यूटेरो में देखो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. दैट मींस सब के अंदर इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट एक्सेप्ट फाइको. So the only fungus where cenocytic condition is found is Phycomycetes. So can you say that cenocytic condition is a primitive type of structure now? क्योंकि सिर्फ फाइको में मिलता है, बाकी में कहीं नहीं मिलता अपने. ठीक है, ओके. माइसीलियम हो गया, राइट? प्लीज बी अटेंटिव. Asexual reproduction takes place by zoospores. Zoo मतलब motile. Aplanospores which are non-motile. These spores are endogenously produced in the sporangium. I told you यहाँ पे देखो. Can you see that this is the sporangium? ये बड़ा जो roundish है वो है sporangium. Can you see spores are produced inside? यहाँ पे दिखाया spores are being released. ये देखो sporangium खाली हो चुका है ये. So spores are produced inside. So it is called endogenous now. A zygospore is formed by fusion of 2 gametes. Can be isogamous and isogamous. Common examples are Mucor rhizopus. The bread mold is rhizopus, and albugo, which is the parasitic fungi on mustard. ठीक है, these are the examples. Ascomycetes, ये penicillin वाला है और yeast वाला example है. 2 very prominent are penicillin and yeast वाला. Commonly known as sac fungi, mostly multicellular like penicillium, rarely unicellular. ये exception है please. Now देखो ईस्ट के यहाँ ब्रैकेट में एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है सैकरोमाइसिस, लिखा है ना? सैकरोमाइसिस ईस्ट का जीनस है, जेनेरा है वो. द स्पीशीज नेम इज सेरेविसे. यू कैन राइट देयर CEREVISAE. सैकरोमाइसिस सेरेविसे, राइट? या फिर एग्जाम में आ जाएगा S.cerevisae. लिखा? Okay. They are saprophytic. We know what are saprophytes. Decomposers, parasitic or coprophilous. They grow on dung. They are growing on dung. So उसको बोलते हैं coprophilous. Right? Mycelium is branch septate.
asexual spores are conidia, right? यही पॉइंट हमने हाईलाइट किया था कि asexual reproduction भी स्पोर है, sexual reproduction भी स्पोर है. Asexual spores are conidia produced exogenously, right? Have a look at this penicillium का structure. ये जो green structure है वो penicillium है, fungus. Can you see the spores are produced? ये उसकी body है, ये जो दिख रही है उसकी body है. Can you see spores are produced at the tip of the body? So it is exogenous in nature, right? Conidia on germination will produce mycelium. Sexual spores are ascospores, ascomycetes. Ascospores, which are produced endogenously in sac, which are called asci. The singular is ascus, right? और इसका जो fruiting body है उसको क्या बोलेंगे? Ascocarp. You know, carp is a fruit, ना? पता है कि नहीं? याद है ना? Carp is a fruit, right? So ascocarp, that's a fruiting body का name. Examples are aspergillus, claviceps and neurospora. ये तीनों example NCERT में, right? Aspergillus again, claviceps, ये तीनों genera के नाम है. ये तीनों genera के नाम है, उसके species के नाम लिख लो आप. Aspergillus niger, Niger, ये species का नाम है. Aspergillus niger, right? This aspergillus causes disease. The disease is called as aspergillosis, right? It is more found in poultry. यानी जो poultry birds होते हैं ना, उसमें fungal infection ये होता है. Second is claviceps. Claviceps का species name is purpura, Purpura. Claviceps is also called ergot fungus. Ergot fungus. One interesting thing about claviceps is, there is a plant which is called as rye, R-Y-E. Plant growth chapter हो गया ना आप लोग का? Plant growth नहीं हुआ है chapter? ओके ठीक है, उसमें आएगा. R-Y-E, राय करके प्लांट आता है, उसके ऊपर ये फंगस ग्रो होता है. ये जो अर्गॉट फंगस है ना ये, और इसके अंदर एक केमिकल होता है, राइट? उसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड. दिस इज ओनली FYI, प्लीज, एकदम राइट, एकदम. ये आएगा आपको, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में आएगा, जहां आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसका. मैं खाली टच कर रहा हूं पॉइंट को, ठीक है ना? क्लैविसेप्स फंगस के अंदर एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड. उससे बनता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड करके, बहुत ही डेडली कंपोनेंट बोलता है, और उस ड्रग को बोलते हैं LSD. You must have heard of a drug called as LSD. It's a psychedelic drug, यानी उसका इफेक्ट इज ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उससे हैलुसिनेशंस आते हैं, वो ड्रग लेने के बाद हैलुसिनेशंस आते हैं, उसको साइकोडेलिक बोलते हैं, राइट? तो वो जो LSD है उसका कंपोनेंट इज lysergic acid. Lysergic acid is coming from claviceps. So the LSD is prepared from claviceps purpura. Okay. You will have this LSD drug in chapter number 8, 12th NCERT, 12th standard NCERT. And last is neurospora. Neurospora crassi. Neurospora crassi. CRASII, crassi. Right? It is used extensively in biochemical and genetic work. Okay, so क्या है 3 examples? Aspergillus niger, claviceps purpura and neurospora crassi. Many members like morels and buffles. ये buffles नहीं है, truffles होना चाहिए. This is changed in the NCERT now, I think so. बराबर, truffles. They are edible, they are considered eatables. They can eat them. So ये ascomycetes है. Coming to basidio. They are known as mushrooms, right? Mushroom is a common form of basidio. ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स. इसको क्लब फंगाई भी बोलते हैं. इट इज समटाइम्स टर्म्ड एज क्लब फंगाई आल्सो. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ओके. Asexual spores are not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Sex organs are absent, but plasmogamy, देखो आ गया basidio वाला एग्जाम्पल. Plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic.
I hope you're understanding this now. Dikaryotic मतलब दो individual nuclei है ना, इसलिए, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously. ये देखो, can you see this diagram? Are these exogenous now? So this is the basidium, and these are the 4 spores exogenously produced. I hope it is clear, please. The fruiting body is called basidiocarp. So ascomycete में the fruiting body is ascocarp. Basidiomycete में it is basidiocarp. Agaricus is an example. Agaricus is the name for mushroom. Again, you can have various species of agaricus depending on edible and not. All mushrooms are not edible, please. All mushrooms are not edible. Some of the mushrooms are poisonous also. Okay. Eustilago, which is called smut, which grows on, maize. Here, देखो, can you see? This is Eustilago. And Puccinia, पहले आया था wheat rust. Puccinia, wheat rust fungus, obviously causing damage to wheat plants. Okay. Lastly, we have deuteromycetes. Imperfect fungi. Why imperfect? Because only the asexual part or the vegetative part is known. बाकी और कोई part known नहीं है उसका. Sexual part known नहीं है. Once sexual stage is realized, discovered, you can move them to asco or basidium. मतलब ये एक temporary group create किया हुआ. Okay. They reproduce only by asexual spores. Sexual तो discovered नहीं अभी तक. Only they are known as conidia. So यहाँ पर और एक बार conidia आ गया. देखो, asco के asexual को भी conidia बोलते हैं. Deutero के asexual spores को भी conidia बोलते हैं. Mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers. Help in mineral recycling. So Alternaria, Coletotrichum, Trichoderma. All these 3 are in the NCERT also. The 3 examples, please. Okay. So what are the 4 groups under kingdom fungi? Phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes. Right? See, if you see the classical, proper classification of fungus, it is not like this. Right? Now, if you try searching for classification of fungi on the net, right, now you will have zygomata, basidiomycota, and all that different type of terminology. ये बहुत simple करके यहाँ पे दिया हुआ है अपने को. Right? Fungi के अंदर ये basic 4 groups होते हैं अपने पास. ठीक है? Right? For your convenience, I have given this also. Right? If you थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पूरा जो एनसीईआरटी का मैटर है पूरा ये चार्ट के अंदर है. बराबर? All the points. Can you see aseptate, sinusitic, branch septate, branch septate, branch septate. Ascomycetes का asexual is conidia. Deuteromycetes का asexual is also conidia. Can you see that, please? Basidium में asexual absent, vegetative is common, right? Sexual में deutero का is not known. देखो यहाँ पे लिखा है deutero is not known यहाँ पर. Ascomycetes में ascospores, basidiospores. Ascocarps, basidio. Endogenous, exogenous, सब मेंशन किया हुआ है देखो. So I think इसका सिर्फ प्रिंट आउट लेके अगर स्टिक कर दिया तुम्हारे बोर्ड पे तो तुम्हारा पूरा फंगस का रिवीजन फट जल्दी हो जाएगा एकदम. All the points are covered. एक एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पर मेंशन्ड है, वो है शायद ट्राइकोफाइटॉन और ट्राइकोस्पोरियम का. ये 2 मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन क्यों मेंशन किया हुआ है वो भी मैं बता दूं तुमको, क्योंकि ट्राइकोफाइटॉन या ट्राइकोडर्मा से ये जो 3 एग्जांपल दिए हुए ना, इनसे जो है ना रिंगवर्म आएगा. एंड रिंगवर्म यू विल बी डूइंग रिंगवर्म इन चैप्टर नंबर 8 हेल्थ एंड डिजीज 12th standard NCERT में. That's why the mention must have been here, right? Yes, please. So fungi is done. Okay. So before I move on to the next part, right now is a small table for you detailing what are advantages and disadvantages of 5 kingdom system of classification. 5 kingdom हो गए अपने अभी.
मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया, पांचों किंगडम हो गए अपने में। एडवांटेजेस ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, कि प्रोकैरियोट्स को सेपरेट किया यूकैरियोट से, राइट। प्लांटे और फंगाई को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए। यूग्लेना जैसे ऑर्गेनिज्म को घर मिल गया रहने के लिए, वरना दे वर नॉट हैविंग एनी प्लेस टू स्टे बिकॉज दे आर डाइसी, दे शो बोथ द मोड्स, लाइट है तो फोटोसिंथेटिक, लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रोफिक, एकदम चीटर्स। ओके, सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ दिस किंगडम, राइट ना। लेकिन यही डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यू सी सम आर फोटोसिंथेटिक, सम आर नॉन फोटोसिंथेटिक, राइट ना। क्योंकि वी सी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तीनों साथ में आ गए एक ही ग्रुप में। समथिंग लाइक प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम पड़ा, trypanosoma pada, and at the same time diatoms and all that producer is also there, all those have come together, right? But for the timing, because you are not able to place them anywhere, we have created protista. Maybe aage jaake we might have a more refined and a developed classification of protista also. But the biggest disadvantage is still there is no place for viruses in this classification, right? We are not having any place for classification in viruses. Okay, so this is the biggest disadvantage of the 5 kingdom system of classification. Okay, so यहाँ पर kingdom fungus और पूरे 5 kingdom system का classification का discussion खत्म होता है, लेकिन there are certain organisms which do not find place in this discussion. जैसे we mentioned viruses. Viruses lichen का भी कोई जगह नहीं है, but lichen जैसे organisms exist कर रहे हैं, है क्या नहीं? But they are not finding any place in the classification. So we have to search a place for the classification, or maybe what are these organisms exist. So 4 type के organism discussed हैं. Viruses are there, viroids are there, lichen is there, and prions are there. ये 4 organisms discuss किए, very brief discussion of all of them. उससे पहले lichen का discussion हम लोग नहीं करेंगे, पहले virus का discussion करेंगे, right? Virus, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, देखो दिखने में इतना मस्त एकदम, लेकिन है बहुत डेडली। Yes, anybody can tell me anything about viruses, whatever you know, no problem, chalega. Let's hear it from your side. I've been speaking for quite some time now. I need some rest. Any point? Yes, Jia, help us please. Jia, go ahead. Their genetic material is RNA. So Could they be keep DNA on also, repeating. beta. Could be DNA also, beta. Okay. Could be DNA also. Anything else, Jia? Yes, Jia, anything else? Naik, Rutvi, can you help us please? Non-living outside the organism, and once it enters the host organism, it becomes living. Maybe a little explanation more would help us, beta. Your point is correct, Rutvi. Your point is absolutely correct. Maybe थोड़ा सा explain कर सकते हो उसको. You said Like it is once non-living. It is non-living outside, but living inside. ऐसा बोल रहे हो तू? non-living outside the host body. Yes. Okay. Khush, you want to say something, beta? Khush? Yes, sir. They like take up the genetic material of the host. So it's very difficult to make antibiotics like medicines against them because they don't have the specific genetic material. Okay. Okay. ठीक है. Anything else anybody wants to add to that, please? ठीक है. Now see, viruses are very unique creatures. As Rutvi said, they are non-living outside the cell, right? Na? But once they, because unke structure में क्या है basically? In the structure of a virus, if you see, what is there in the structure of virus? ये देखो virus का structure है. In the structure of a virus, you have genetic material अंदर. The genetic could be RNA, could be DNA. कुछ भी हो सकता है, depending on the type of virus. Jia, don't be stuck on only on RNA, beta. Okay. And it is surrounded by a protein coat.
राइट, मतलब न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है. तो कैन आई से वायरस का स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन. वायरस का स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन. और ऊपर से ये जो प्रोटीन के कोटिंग है ना, ये ग्रीन कलर का प्रोटीन कोटिंग लिख रहा है अपने को, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर प्रोटीन के सब यूनिट्स. राइट, उसको हम लोग कैप्सोमियर्स बोलते हैं और ये प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं. तो उसको कभी कभी हम लोग न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं. द प्रोटीन इज कॉल्ड कैप्सिड. राइट, नाउ this structure, there is no nucleus, there is no chloroplast, there is no mitochondria, there is no Golgi body, there is no endoplasmic reticulum. So in other words, I say it does not have any metabolic machinery of its own. मतलब इंडिपेंडेंटली क्या वो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. अगर वो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकता है तो हम उसको सेफली नॉन लिविंग गिन सकते हैं. बट, राइट ना, बट, किंतु परंतु, वंस इट एंटर्स द होस्ट सेल, राइट, पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे. वो होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने बाप का माल समझ के यूज करेगा, एकदम बिंदास. तेरा माइटोकॉन्ड्रिया मेरा, तेरा गोल्गी बॉडी मेरा, सब कुछ मेरा, एकदम. एंड इन द प्रोसेस अपना खुद का रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और होस्ट सेल बेचारा मर जाएगा. सो आउटसाइड द होस्ट सेल इट इज नॉन लिविंग, बट विद इन द होस्ट सेल इट इज एक्टिंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So understand why we are still not able to gauge that ये actually living structure है या non living structure है, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है वो होस्ट सेल के अंदर ही. देखो, अगर वो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है तो क्या हम लोग बोल सकते कि ये एक पैरासाइट है? राइट ना, ये एक पैरासाइट है. अच्छा, पैरासाइट जो सेल के अंदर काम करेगा या सेल के बाहर? सेल के अंदर. तो ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है. ठीक है, कंपल्सरीली. तो वी से इट इज अ ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट. So if somebody is asking, what is a virus? One line definition. Viruses are obligatory intracellular parasites. Wow. Right? सामने वाला भी इंप्रेस हो जाएगा, अपनी बात भी रह जाएगी. One sentence answer. What are viruses? Viruses are obligatory intracellular parasites. खत्म. So understanding ये नॉन लिविंग लिविंग चक्कर समझ में आ रहा है अपने को? बराबर? ठीक है, ओके. Let us take this discussion from the NCERT. Better do it from there. अच्छा, ये देखो, ये छोटा सा किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमले का डिस्कशन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब डिस्कस करने के बाद ये जो है वो थोड़ा सा, राइट ना, इसमें खाली 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में. वो जरा ध्यान रख के पढ़ लेना प्लीज, इसको इग्नोर मत करना प्लीज. ठीक है, वायरसेस, राइट, प्लीज. इन द 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichen and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. Right? So पहले अपने वायरस का डिस्कशन है. प्लीज पे अटेंशन. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, right? It's high time the syllabus gets changed and they introduce something like COVID also here, right? Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms. They are non-cellular. Cell जैसा कोई structure ही नहीं उनके पास. That are characterized by having an inert crystalline structure outside the living. Please underline this. It is inert, inactive, but a crystalline structure outside the cell.
वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, अब सेल के अंदर, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. कौन सा मशीनरी? मेटाबॉलिक मशीनरी. अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट इज मेटाबॉलिक मशीनरी? All the organelles which are responsible for performing metabolism, metabolic machinery, to replicate themselves. क्या करते हो प्रोसेस में? They start replicating themselves and killing the host. And killing the host. Right? So once they infect, they'll take over the machinery of the host cell. They'll start replicating. एक बार replication हो गया, they'll kill the host cell. Right? A small historical part has been given. Virus means venom or poisonous fluid. Dmitry Ivansky recognized certain microbes as causal, I'm so sorry, causal. I'm so sorry, right? Causal organism of the mosaic disease of tobacco, TMV, tobacco mosaic virus. दिख रहा है आपको? Mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filters. Can you see a bacteriophage का डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे? जो इमेज मैंने वायरस का दिखाया था ब्लू वाला अभी पीपीटी में, राइट ना? ये सेम था, बैक्टीरियोफाज, राइट? You'll be surprised that viruses इतने छोटे होते हैं कि they can infect bacteria. मतलब they can get inside the body of the bacteria, right? तो बैक्टीरिया भी कंप्लेन कर सकता है मेरे को वायरल फीवर हो गया, बराबर क्या नहीं, right? So they can you imagine the size of the virus now that it can get inside? So these viruses are bacteriophage. This is a special bacterial virus, bacteriophage. Okay. M.W. Byrenic demonstrated that extract of the infected plants of tobacco, जिसको TMV, tobacco mosaic virus infection हो गया है, उसका अगर आप extract निकालते हो, right, can cause infection in healthy plants. उसको आप inject करते हो healthy plant में, तो ये disease transfer हो सकती है. मतलब the virus is infectious in nature. This was discovered by N.W. Byrenic. उसको क्या बोला उसने? Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. And Stanley showed that virus would be crystallized, and these crystals are largely proteins. They are inert. Inert मतलब inactive. Outside their specific host cell. Please underline specific. Host तो समझ में आ गया तुम लोग को. But specific. This is telling us something. The one word that means viruses are host specific. Viruses are host specific. ऐसा नहीं है कि कोई भी वायरस कोई भी सेल के अंदर घुस जाएगा और होस्ट की तरह मजा कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट? हर एक सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. अगर वायरस का रिसेप्टर के साथ कंपैटिबिलिटी जमा तो वो अंदर जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल दो आपको मैं, ठीक है? Have you heard of the disease called measles? Measles बचपन में हुआ था, राइट ना? मीजल्स वायरल डिजीज है, लेकिन मीजल्स या चिकन पॉक्स से कैन यू सी स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन पे अफेक्ट होता है ना वो. तो मीजल्स का वायरस का होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट स्किन का सेल. अच्छा, कभी ना कभी सबको फ्लू हुआ रहेगा, इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस का होस्ट कौन है? नेजल एपिथेलियम का सेल, क्योंकि नेजल इन्फेक्शन होता है उससे. आ रही बात समझ में? पोलियो, राइट? मम्स. नाउ मम्स इज इन्फेक्शन ऑफ पैराथायरॉइड, है क्या नहीं? सॉरी, सलाइवरी, आई एम सो सॉरी, माय बैड, सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड. जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, उसके इन्फेक्शन को मम्स बोलते हैं. तो मम्स का वायरस का स्पेसिफिक होस्ट. पोलियो वायरस, पोलियो वायरस का होस्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेल, न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स डैमेज करता है, इसलिए लेग्स एंड हैंड्स गेट डैमेज्ड इन पोलियो.
because the neurons get damaged. अच्छा वो छोड़ दो, HIV. HIV is targeting helper T cells, the CD4 lymphocytes. मतलब उसको स्पेसिफिकली वो गिर गया मतलब पूरा इम्यून सिस्टम गया तुम्हारा. समझ रहे? द स्पेसिफिसिटी. सो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. सो वायरसेस रैंडम किसी को भी होस्ट नहीं बनाएंगे. ठीक है. और लास्ट में क्या लिखा है? वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया, इंट्रासेलुलर. वायरसेस आर obligatory intracellular parasites, not outside the cell. They are parasites, but within the cell. Right? Is the discussion clear to everybody, please? समझ में आ रहा है discussion पूरा? Okay. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. जिया, बराबर ना? That could either be RNA or DNA. Okay, it would depend upon what organism, what kind of a virus it is. Is it a plant virus? Is it an animal virus? Or is it a bacterial virus? उस पर depend करेगा कि उसमें RNA है या DNA. ठीक है? No virus will have both RNA and DNA. Right? Even HIV में भी क्या होता है? HIV में the virus keeps on mutating. RNA to DNA, DNA to RNA. It keeps on mutating, but दोनों एक साथ कभी नहीं होगा. A virus is a nucleoprotein. Just describe क्या हमने? न्यूक्लिक एसिड सेंटर में है, राइट, और ऊपर कवरिंग किसका है? प्रोटीन का. ठीक है. ये देखो, कैन यू सी, ये कैप्सिड है. कैप्सिड लिखा है ना, ये कैप्सिड. ये कैप्सिड में ब्रैकेट में लिख दो प्रोटीन. ये कैप्सिड को ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन, या आरएनए को ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन. बराबर ना? न्यूक्लियोप्रोटीन. और क्या लिखा है? एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. उसका जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. In general, viruses that infect plants, now we're talking about plant viruses, have a single-stranded RNA. Questions में कभी-कभी instead of giving total single-stranded का spelling, they will write SS-RNA. खाली SS लिख देंगे. SS stands for single-stranded. Double-stranded के लिए DS लिखेंगे वो लोग. Okay, single-stranded RNA. And viruses that infect animals are either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. मतलब एनिमल्स में वैरायटी बहुत ज्यादा है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, ये तीसरा वायरस देखो. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस दे आर डिस्क्राइबिंग हियर? 3 viruses: plant viruses, animal viruses, and bacterial viruses. Bacteriophages are usually double-stranded DNA virus. आ गया क्लासिफिकेशन अपने को आरएनए डीएनए का, बराबर ना? तो अगर प्लांट वायरस है तो इट इज यूजुअली अ एसएसआरएनए. बैक्टीरिया है तो डीएसडीएनए, और एनिमल है तो तीनों हो सकता है. एसएसआरएनए, राइट ना? देख रहे हैं ना? एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, डीएसडीएनए. Are we clear about these plant, animal, and bacterial viruses, please? The protein coat called capsid is made up of small subunits called capsomeres. Protects the nucleic acid. The capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Right? Helical form में आपको plant में मिलेगा, और polyhedral आपको animal में मिलेगा. Right? Helical, ये देखो, ये प्लांट है, एनिमल का एक मिनट दिखाता हूं आपको मैं. वायरसेस में कॉज डिजीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीस, राइट? हर्पीस यू मस्ट हैव कम अक्रॉस व्हेन यू डिड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स में किया रहेगा हर्पीस शायद से, राइट? एंड इन्फ्लुएंजा.
AIDS in humans is also caused by a virus. You know, the virus is called as HIV. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. We don't need to know the details of what are these symptoms in plants. We only need to know that these are the symptoms which are present in plants that are infected by viruses. Clear, please? Yes. Now this is वायरसेस का डिस्कशन. 1 मिनट, अभी 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी पीपीटी से. राइट, ये तीनों का डिस्कशन दिया हुआ है. देखो यहाँ पे इवांस्की का, बायरेनिक का, स्टैनली का. अगेन ये कैप्सूल और कैप्सोमियर का डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, हाँ, ये देखो आप, ये टबैको मोज़ेक वायरस है. राइट, ये है अडीनो वायरस. कैन यू सी पॉलीहेड्रल शेप दिख रहा है आपको? ये पॉलीहेड्रॉन दिख रहा है, आया था ना. प्रोटीन कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीहेड्रॉन. ये एनिमल्स में दिखता है आपको. दिस इज अ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड दिस ईयर इज अ bacteriophage, as I told you, right now, a virus which can infect bacteria. Right, for your convenience, I have shown the classification also, right? Okay. Now, after viruses, we have viroids. Viroids. Now, viroids were discovered by T.O. Diner, right? It was smaller than viruses. Viruses में क्या होता है? अंदर न्यूक्लिक एसिड, ऊपर प्रोटीन का कवरिंग. तो यहां पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, नो प्रोटीन कवरिंग, सिर्फ आरएनए. राइट, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोट, नो प्रोटीन कोटिंग. राइट, द फर्स्ट मेनली प्लांट पैथोजेंस है. The first viroid which was discovered was potato spindle tuber viroid, PSTV, right? Potato spindle tuber viroid. It was the first one discovered, right? It is just single RNA. देखो ये RNA discovered है यहाँ पे, ये देखो ये सामने, या तो लीनियर होगा या क्लोज्ड हो सकता है, दोनों में से. डिजीजेस के नाम दिए हुए, सिट्रस, एक्सोकॉर्टिस, क्रिसैंथेमम, स्टंट, ककम्बर, बेल फ्रूट. आर दे मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी आल्सो? नहीं, तो डोंट टेंशन अबाउट दैट. ठीक है. उससे छोटे होते हैं प्रायॉन्स. राइट, नाउ प्रायॉन्स आर टिपिकली फाउंड टू कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस. राइट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रायॉन्स, राइट, यू हैव टू रिमेंबर द 2 डिजीजेस का नाम. इन एनिमल्स द डिजीज इज कॉल्ड BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. राइट, बोवाइन का मतलब होता है कैटल. बफेलोस, काउज आर कमिंग अंडर बोवाइन. इसलिए यहाँ पे देखो कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज, द मैड काउ डिजीज इन कैटल. एंड इसी का एनालॉगस फॉर्म ह्यूमन के अंदर इज CR जेकब डिजीज. CR इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इट्स नॉट कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ, बट CR जेकब डिजीज, CJD बोलते हैं उसको. दे आर एनालॉगस टू ईच अदर, राइट ना, कॉजिंग सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स. ठीक है. So ये है prions. Prions का सिर्फ इतना ही. Only the names of the 2 diseases are important for prions. लास्ट में बचता है अपना lichen. Right? Now lichen, whatever discussion is given in the NCERT, last paragraph है देखो lichen में एकदम. They are symbiotic associations between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont, right? यहाँ पे you can make a note. It is either green algae or blue-green algae, right? Phycobiont. Mostly it is green algae. Mostly it is green algae. And fungal component is mycobiont. Myco, I told you, is fungus, right? अच्छा, कितने ग्रुप्स पढ़े फंगस में हमने? 4 ना. कौन से पढ़े? फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बसिलियोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स. तो यहां पर कौन सा फंगस होगा? फाइको को छोड़ के बाकी तीनों हो सकते. यहां
एस्को भी हो सकता है, बसीडियो भी हो सकता है, ड्यूटेरो भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग इन लोगों लाइकन को क्या बोलेंगे? एस्को लाइकन, ड्यूटेरो लाइकन, बसीडियो लाइकन, ऐसे बोलेंगे उसको हम लोग। Role of algae is to prepare food for the fungus, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Right? Lichens are very good pollution indicators. Very, very important statement. Lichens are very good pollution indicators. Very good pollution indicators. Right? That's why they never grow in areas near human population. Right? Generally, human population जहाँ पे रहेगा, pollution रहेगा ही वहां पर. Okay, so they grow outside cities. Okay, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर the amount of sulfur dioxide starts to increase. Sulfur dioxide coming mainly from industries, right? इसका बहुत ही negative effect होता है. The lichens start dying because of that, and that is an indicator that atmosphere में pollution बढ़ गया है. Because lichen they grow on tree trunks, right? तो trunk पे से वो नीचे गिरने लगते हैं. That's an indicator that pollution बढ़ रहा है यहाँ पर. So they are good pollution indicators. Kingdom plantae में हमने पढ़ा था moss. याद आ रहा है? moss पढ़ा है? वहां पर हमने किया था moss and lichen are pioneers of vegetation on rocks, right? So lichen is important there as a pioneer of vegetation on rocks, right? वहां पर थोड़ा moss में note भी लिखा था, it's a part of primary succession करके लिखा था वहां पे हम लोग, right? So ये दो point lichen के बारे में important है. दो ecological uses. One, it is a pollution indicator. Two, it is a pioneer of vegetation on rocks. ये दो चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है? Right, so with that we finish the entire chapter on biological classification. ठीक है?